dear students, myself Gangadhar Solanke and I welcome you all to the MCGM's virtual classroom. My dear students, today we are continuing with the topic evolution of mankind. In the first part of this topic, we discussed about the skilled human, Homo erectus and the Homo neanderthal man. Now in today's and the second part of this topic, we are going to discuss about the Homo sapiens. So in this topic, we are discussing about the evolution of mankind, and in the Homo erectus and in the skilled human, we discussed about the development in the brain. The skilled human, basically who can use his hands skillfully. Then in Homo erectus, can stand erect. And now about the Homo sapiens, the human species that was more intelligent than any of other earlier species was named Homo sapiens. So the characteristics or the speciality of the Homo sapiens is that more intelligent than any other earlier species. In Europe, Homo sapiens is also known as Cro-Magnon man. The remains have been found in the continents of Europe, Asia and Africa. Homo sapiens made different kinds of tools and implements to suit the task they needed to do. This one is very important thing. जैसे हमने होमो निएंडरथल में या फिर होमो इरेक्टस में द स्किल्ड ह्यूमन में देखा कि इन्होंने भी टूल्स बनाए, लेकिन कौन सा टूल किस काम के लिए यूज़ करना है उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था. एग्जैक्टली या फिर 100% वो यूज़ करना नहीं जानते थे, लेकिन टूल्स बना रहे थे. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द होमो सेपियंस, दे एग्जैक्टली नो द यूज ऑफ टूल और they made different kinds of tools and implements to suit the task they needed to do. They used to make stone blades and fixed them in grooves and notches made in wood or bone handles. For example, today we are using screwdriver and different types of scissors or knives for different purposes. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल हुए, लेकिन ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं. सो होमो सेपियंस स्टार्टेड दिस. होमो सेपियंस had evolved to the stage of having fully developed larynx, which could produce a range of sounds with subtle differences. And this one is the very important thing in the history of human being. जैसे आज हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं, अलग अलग टोन है, अलग अलग फ्लुएंसी है. ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई क्योंकि लैरिंक्स जो है वो होमो सेपियंस का अच्छे से डेवलप था. Their jaws and the muscles inside the mouth were well developed and the tongue was flexible. That's why they could create sound, and hence Homo sapiens could use them to produce a variety of sounds, and not only producing sound but to modulate his voice the way he liked. And then using his imagination, he could give names to the different things he saw and could put his thoughts and feelings into words. Very important thing. Naming the things. Naming the things. जैसे आज हर एक चीज़ को नाम है हमारे आजू बाजू में. जैसे ये घर है, ये बुक है, ये स्पीकर है, ये फ़ोन है, ये पेन है, ये पेंसिल है. ये हर एक चीज़ को जो हमने नाम दे के रखा है और उसे याद रखते हैं ताकि बाकी लोगों को समझने में आसानी हो. और जब छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है तो वो
उस पर्टिकुलर चीज को उसी नाम से जानता है. सो होमो सेपियंस फर्स्टली by using the imagination could give names to the different things. उन्होंने अलग अलग चीज़ों को नाम दिया. He saw and could put his thoughts and feelings into words. मन में जो भी thoughts आते थे उन्हें words में वो रख सकते थे. Nowadays we have rich literature like lyrics in the movies or movie stories or dramas or शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स, ये सारा क्या है? ये ह्यूमन बीइंग्स के थॉट्स है जो हम उस लिटरेचर में डालते हैं. तो कभी ये ड्रामा के रूप में आता है, कभी मूवी के रूप में आता है, तो कभी उसे आर्टिस्ट ड्रॉ करते हैं. सो इट वॉज स्टार्टेड बाय होमो सेपियंस. इन शॉर्ट, ही हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम. वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम. He could draw pictures on the basis of actual observation as well as imagination. While drawing a picture, both the things are very important. One thing is actual observation and second one is of imagination. एक तो आपने किसी चीज़ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होना चाहिए, तभी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन आप उसको और अच्छा बना सकते हैं. सो the Homo sapiens could draw pictures on the basis of actual observation as well as imagination. He even began to make artistic objects. जैसे आज अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में होते हैं, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हम रखते हैं वैसे. And that is why he has been named Homo sapiens, which means intelligent man or thinking man. He could think. और सिर्फ सोच नहीं सकते थे बल्कि उसे अलग अलग चीज़ों में डाल सकते थे, जैसे बात करते वक्त लैंग्वेज में या फिर ड्रॉ करते थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होमो सेपियंस. हियर यू कैन सी cave painting by Homo sapien. Now the next one, cave paintings by the Homo sapiens. You can see the shapes and the sizes and the color scheme. Now the next point is Homo sapiens sapiens and civilization. Today we are having civilized society or the world is civilized. इसका मतलब क्या है और ये पहले कैसे स्टार्ट हुआ? Homo sapiens is the name given to the humans as the capacity to think developed even further than that of Homo sapiens. So ये उनका नेक्स्ट स्टेप था. That was why it was named Homo sapiens sapiens. Homo sapiens से भी ज़्यादा इनकी कैपेसिटी थिंकिंग की बढ़ गई थी. That is why they are known as Homo sapiens sapiens. The capacity of their brain, not only of thinking, capacity of their brain and their grasping power also developed further with time. Now here grasping power, which is very important for students also. जब हम कुछ सुनते हैं तो उसे समझना किसी चीज़ को, दैट इज़ ग्रास्पिंग पावर. जब टीचर क्लास में पढ़ाते होते हैं तो हमें कितना जल्दी समझता है, किसी चीज़ को हम कितना जल्दी याद रख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट ग्रास्प. हम किसी चीज़ को कैसे ग्रास्प करते हैं. तो होमो सेपियंस सेपियंस की ग्रास्पिंग पावर टाइम के साथ और बढ़ती चली गई. With the modern humans are Homo sapiens sapiens. So if we talk in the language of evolution of mankind, then we are Homo sapiens sapiens. हम कौन है? Homo sapiens sapiens. Now if we talk about the appearance and health characteristics of human beings indicate their similarity to their ancestors, and this is known as heredity. For example, we look like our parents.
हम हमारे मम्मी पापा के तरह दिखते हैं. Many characteristics of our parents are in us. हम में उतर जाते हैं. Not only appearance wise but health characteristics also. कुछ कुछ जेनेटिकल डिसीजेस होते हैं जो मम्मी पापा को होते हैं तो वो आगे बच्चों में भी आते हैं, या फिर दिखने जैसी कोई चीज़ें होती है कि वो हम उनसे लेते हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज हेरिडिटी. जेनेटिक्स इज साइंस दैट स्टडीज हेरिडिटी, and genetic research has shown that we have inherited some traits of the Neanderthal man, not only from the Homo sapien but Neanderthal man के भी जो कुछ trait है वो भी हम में है. Thus it can be said that the Neanderthal man and Homo sapiens are both ancestors of the modern humans. We are Homo sapiens or modern humans, but we have characteristics of both Neanderthal man and Homo sapiens. तो हमारे ancestor कौन हुए? Neanderthal man and Homo sapiens. Here the Neanderthal one and the Homo sapien. So ये हमारे ancestor हुए. Around 11,000 to 10,000 BC, Homo sapiens developed the technique of cultivating land-keeping animals. Cultivating land and of keeping animals. And this was the move, or this was the very tremendous or the important change which changed the life of human being. And today we can see that the whole life of human being or the mankind is totally depend on the cultivation of crops or cultivating the land. So here Homo sapiens started cultivating land and keeping animals. Because of their well developed capacity to think, the speed at which they improved the technology increased with time, and they began to live more settled life. जैसे द स्किल मैन है, नियंडरथल है, या फिर उसके पहले का होमो इरेक्टस, ये सारे जंगल में घुमा करते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे. सेटलमेंट उनकी लाइफ में नहीं था. इट वॉज देयर इन द होमो सेपियंस एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द कल्टिवेटिंग लैंड. They began to live a more settled life and they began to grow food grains in the fields. That's why no need to wander in the search of food. In search of food, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. As a result, the amount of carbohydrates in their food increased. The changed lifestyle and diet affected the appearance of humans and their body and face grew smaller. Body or face छोटा होता गया than they had been in the earlier generations. Now the next one, the Homo sapiens reflects their intellectual and cultural rather than their physical powers. जैसे Homo नियंडरथल में हुआ करता था फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग मैन, फिजिकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वैसे होमोसेपियन विच इज अबाउट देयर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल पावर. मॉडर्न ह्यूमंस आर नॉट satisfied with only doing that much. All animals must necessarily meet their basic need for food, but if we talk about the modern humans, they're not satisfied with only doing that much. Through their lives, using their creativity, intelligence and skills, three things which are very important in the development of human being or in the evolution of mankind. Creativity, intelligence and skills. And man used his creativity, used his intelligence and used his skills to change the life. So human beings acquired a culture and continue to develop it, and today also we are continuously developing in the
fields of science and technology, in the field of agriculture, in the field of culture also. The technological and cultural progress. टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस. फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करेंगे तो होमोसेपियंस के पहले उन्हें अच्छी तरह से ड्रॉ करना नहीं आता था. ड्रॉ करना तो आ गया था, लेकिन अच्छी ड्राइंग जिसे हम बोलेंगे, टूल्स अच्छे से बनाने नहीं आए. बट टुडे वी हैव सैटेलाइट्स, टुडे वी हैव कंप्यूटर एंड नंबर ऑफ थिंग्स विच वी कैन गिव एज एग्जाम्पल. सो द टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस achieved by modern humans after the beginning of agriculture and domestication of animals has been extremely rapid. इसके बाद जो एक स्पीड आ गई प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, वो बहुत ज़्यादा थी. सो इन टूडेज टॉपिक we discussed about the Homo sapiens, Homo sapiens sapiens and civilization. The history of the evolution of humans that began from apes can be divided into various stages, and in today's topic we discussed about that stages like Homo neanderthal, Homo erectus, the skilled human, then Homo sapiens and the Homo sapiens sapiens. But here one thing which is again very important to understand, that the culture or the civilization ये कैसे बना, तो बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. और वो सेटलमेंट कैसे हुई? विद द एग्रीकल्चर. सो progress achieved by modern humans after the beginning of agriculture and domestication of animals has been extremely rapid, and today we can see that. Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications. So my dear students, this is all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.